ओके आज आम देखा कि आज आम टॉपिक अच्छी रियल फंक्शंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय रियल फंक्शंस? फर्स्ट आम किसी डेफिनेशन देखियो। ए फंक्शन व्हिच इज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इज रेंज, माने आइदर रियल वैल्यू तार रेंज ही थिबो या रियल सेट रो कौन सी सबसेट जेमति कि z हे जाओ, जेड किंबा एन ही जाओ, तो ताको रियल वैल्यूड फंक्शन को आजिबो काई जे फंक्शन रो जे रेंज से जाको पॉइंट करछि से बोले रियल वैल्यू को दउछि। बट जदि तार डोमेन भी जदि रियल हेतिबो किंबा रियल रो सबसेट हेतिबो ताको हमें कहबा रियल फंक्शन, cause डोमेन जते रियल हेतिबो ताको हमें रियल फंक्शन कहि परिबो। किछटा एग्जांपल अछि हम पाखरे, जेमति कि आइडेंटिटी फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एवं कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, so many functions are there. तो एबे हमें देखिवा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। मोटे समस्तଙ୍କର नाम लेखि नै, यू कैन गेस व्हाइल वाचिंग द वीडियो, फंक्शन गेस कर परिबे। मु मध्ये गोटे गोटे कहि कहबी दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। अगेन आई एम गिविंग मोर प्रेशर टू ग्राफ। ग्राफ बहुत पिला ग्राफ ऊपर बेसी फोकस करते नहीं, ग्राफ को फोकस न कले परीक्षा रे क्वेश्चन सब, किंतु ग्राफ इफ यू फोकस ऑन ग्राफ मोर देन यू कैन डू द क्वेश्चंस वेरी इजीली। ग्राफ ऊपर बेसी फोकस करले क्वेश्चन बेसी इजीली हे परिबो। तो फर्स्ट हमें जो फंक्शन देखछे आइडेंटिटी फंक्शन। व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन इज y is equal to x. It is our identity function. Graph is something like this. This is the constant function, y equal to some constant. In this, y equal to 2. This is a constant function. Another function I have here, you can say this is the modulus function. Any modulus function will be in the shape of this, something like this and this. I can have some other modulus functions, like if I have 2 3 modulus, like some x minus 2 mod plus x minus 4 mod. So I will have two values, like one at x equal to 2, one at x equal to 4, and probably my function will go something like this, and I will have some minima probably like this, or I can't remember if this is this. But at positive infinity, it will go to infinity. At negative infinity, it will also go to infinity. So we have to take care of that. And these type of functions are modulus function. And I have another function here. This is a cubic function. As you can see, this is have three roots, -1, gote root -1, gote root 0, gote root 1. Cubic function eta negative infinity minus, positive infinity plus. I can have other polynomial function like this, like I can have some polynomial function like this is a polynomial function. This is a quadratic function. Something like x is x square plus bx plus c, एटा quadratic function ही परियो। एवं the continuity जो lecture होगा सकता है, but every polynomial function is continuous. This is a very means nice result. Every polynomial function is continuous. Every polynomial function is continuous. आउरी किछि function हमें देखिबा। This is a function. You can guess what the function is. If you have guessed correctly, I think this is a rational function. Then what is a rational function? So in the rational function, what we will do? Rational function में generally कौन था ना कि there is some term in the denominator like x plus 3, some polynomial also x cube plus x, x square minus 1. जो जो पॉइंट रे डिनोमिनेटर 0 होतिबो, जो जो पॉइंट रे डिनोमिनेटर 0 होतिबो, like here
x इक्वल टू 1 तो डिनोमिनेटर रे निहाती गोटे फैक्टर x माइनस 1 थिबो कहीं की ना x इक्वल टू 1 रे फंक्शन इन्फिनिटी टेंड करछि जेतबे जस्ट बड़ होछि पॉजिटिव रे डिवाइड होछि पॉजिटिव 0 रे तो से पई पॉजिटिव इन्फिनिटी टेंड करछि अदरवाइज नेगेटिव इन्फिनिटी तो रेशनल फंक्शन आर नॉट कंटीन्यूअस not all rational function not all rational function 1 upon x plus 2 or minus 2 like something like this is not continuous but 1 upon x square plus 1 this is always continuous 1 upon x square plus 1 रे जदि मु ग्राफ ड्रा करबी तो at x equal to 0 it will have 1 then it will go down like this it will go down like this continuous always continuous कौन सी ब्रेकिंग पॉइंट है कहेंगे डिनोमिनेटर कभी भी 0 ही पे तो these are rational functions this is the signum function what is signum function is generally sign of the function साइन कौन जदि पॉजिटिव नंबर तार वैल्यू होबो 1 नेगेटिव नंबर वैल्यू -1 0 पाई वैल्यू 0 होता है एवं this is also not a continuous function this is a very famous function known as the GIF probably समस्त जाना थो greatest integer function also called the step function because the graph is like step this is like this step function this is the greatest integer function nearest integer less than or equal to that integer this is the greatest function तबे एबे different type of function हम देखले तो एबे some types of function हम देखा definition one function these are very important things one function I will have my highlighter a function x2y is said to be 1 if images of distinct element of x under f are distinct very important point images of distinct element of x under f are distinct माने धर आम पाखरे फंक्शन रो डोमेन रे दुटा वैल्यू अछि a और b रेंज रे वैल्यू अछि c और d a रो इमेज c हैला जदी b रो इमेज c हेई परिबो नाही if the function is 1 जदी a रो इमेज c हैला तो b रो d हेबा पई पड़बो दैट इज नॉट ए ना रो जाना पड़ जो 1 1 कौन सी भी रेंज रो कौन सी भी इमेज कौन सी दुईटा वैल्यू सेम जगह को पॉइंट कर परबे दिस इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वन फंक्शन लाइक दिस if this is the function कि 1 भी a को पॉइंट करछि 2 भी a को पॉइंट करछि तो that is not a one function that is not a one function but I have another graph suppose like this I have 3 points here 1 2 3 I have 2 points here one function is not possible here कहीं की जदि मु आर इमेज आकु करी आर इमेज आकु यार इमेज नबा पई मो पाखरे आ स्पेस ही नहीं तो one function is not possible example identity function हमें देखथिले जो identity function this is the identity function this is one function identity function is one function काहे की every value of single value y equal to x for all value of x there is unique value that is x greatest integer function is many one why many one रो value 1 माउटे क्लियर कर दे भल से देखा जिवो 1 पाई x equal to 1 पाई value होची 1 x equal to 1.5 पाई मध्ये value 1 तो 1 1 रो डेफिनेशन ब्रेक दिस इज नॉट ए वन ग्राफ देखि कि वन फंक्शन कहबा बहुत सहज इफ देयर इज अ फंक्शन तमु जदि के पचाला कि सिंपल x sin x is 1 1 or not you can just simply draw the graph x sin x not 1 1 काहे की ग्राफ भी ड्रॉ करिया दरकार नहीं यू कैन टेल at x equal to pi this will be 0 at x equal to 0 this will be 0 दुईटा एमिति वैल्यू मिलेला जहां पाई की वैल्यू अलग किंतु रेंज सेम आछे तो दिस इज नॉट ए वन
Similarly, we have another definition, onto function. A function is onto. A function is onto. If every element of y, means every element of y is in the image. माने जो कोडोमेन हमर y होची कोडोमेन जेठी x4 एटा जेउठी हम वैल्यू पॉइंट को सेटा होची हम कोडोमेन कोडोमेन रो सब वैल्यू रेंज रे आस्तु कोडोमेन रो सब वैल्यू रेंज रे आस्तु जेमति कि जदी मु एठी एमिति करली 1a 2a this is not 3b and 4c म d खाली रहेगा तो d जदी खाली रहबो सेटा ऑनटू ही पारे तो दिस इज नॉट अ ऑनटू फंक्शन example you can verify yourself identity function is onto signum function is not onto signum function कौन थिला this this तो एबे तमे वेरीफाई कर परियो कि व्हाट इज onto और not composition of functions function रे बहुत कम कांसेप्ट अछि किंतु बहुत भलो कम composition दुईटा फंक्शन हम पाखर अछि f और g composition आमे दुई प्रकार कर परियो f of g कर परियो g of f definition f of g g o f x g of f x केमिति करिबा g प्रथमे fx करिबा fx रो जो वैल्यू आसीबो ताको g रे x भावर नै कि वैल्यू करियो composition example fx is equal to 8x gx is equal to sin x g of fx केमिति लिखिबी sin of f of x sin of f of x तो sin of f of x जदि मु करिबी तो f of x कोन हम f of x is 8 तो sin of 8x f of gx f of gx 8 of sin x 8 sin x 8 sin x this is simple f of gx is simple so these are called composition I can have many composition like f g h of x तो एटारे कोन करियर अछि फर्स्ट h of x करिवा then g of h of x then f of g of h of x and a very important result is these are means f of g of hx करिवा जहा f of g of hx means bracket doesn't matter invertible function the most important concept the most important invertible function बहुत क्वेश्चन तैयारी था invertible function रो a function is defined to be invertible if there exists a function such that g of f is ix माने कौन identity in x identity function कौन x रे x identity function is y equal to x that is the identity if g of f equal to ix and f of g is equal to ix माने जदी f g रो इनवर्स फंक्शन नहीं थी तो g f रो इनवर्स फंक्शन हो that is 2a this is the most important result you need to remember this if f is invertible f must be 1 1 questions can be framed like which of these there are four options 1 2 3 4 which of this function is invertible or not invertible you just have to check which are 1 1 or onto or not 1 1 or not onto or some function questions can be asked how many invertible function can be formed from this domain to this range 1 1 and 2 check karibar achi only example if fx is equal to 8x plus 8 I can simply draw the graph 8x plus 8 8x x equal to 0 8 8x plus 8 simple x 0 8x plus 8 this I messed up okay this is 8x plus 8 simple graph this is x 8 and this is x equal to minus 8 this is y equal to this is invertible we can see that this is 1 1 every value is only single this x is corresponding this y value this x is corresponding this y value and on 2 it is covering all elements from minus infinity to infinity we can calculate the inverse like this we can write y equal to 8x plus 8 then we can separate the term of x now
thing to calculate inverses, we have to separate the term of x. So I can write x is equal to y minus 8, y minus 8 divided by 8. So this will be, then just replace y by x. You will get your inverse function gx, x minus 8 by 8. This is simple. We will also see another example while we do the questions. Now we have a theorem. Two theorems actually, basic theorem. Like I previously I said, the bracket doesn't matter. H of g of f is h of g of f. Means first you do this composition, then do this, or first you do this composition, then do this. These both are same. And if there are two invertible function f and g, then g of f inverse is f inverse of g inverse. This is a very good theorem. कष्ट क्वेश्चंस रे बहुत यूज आसे आर जनरली बेसी यूज नहीं किंतु मन रखिले भलो g of f रो इनवर्स इज f inverse into g of inverse. तो जनरली these are the concept of a function. Mainly हमें यूज करिवा composition of a function 1 1 on 2 and the function questions. Mainly the questions will come like counting part will come, how many functions will there, and we will see some functional equations. Function ro main question functional equations ro ase, how to manipulate the functions. Now we will see some questions. So many questions. I think I have so many questions for functions. Function रे हमें बहुत किसी question देखिवा, question हिसाब रे concept बुझी होते. First question, title. Title my question title থেকে title was भाभी की दिए domain and range computation. So domain and range is a very good, means simple thing. You have to domain जहाँ पाए वैल्यू डिफाइन हे पारथबो, रेंज वैल्यू डिफाइन हेले वैल्यू कोठी जाय जी. तो केमति देखिया, लेट द सेट a and b डिनोट द डोमेन एंड रेंज रेस्पेक्टिवली ऑफ द फंक्शन दिस. हम पाखरे फंक्शन देला fx is equal to 1 by under root of, this is not greatest integer function. Definition देछि जे ceiling, this is called ceiling of x denotes the smallest integer greater than or equal to x. माने 1 by ceiling of x over 1. 1.1 by ceiling of x over 2 means greater than equal to. Simple. Then हमको किछटा स्टेटमेंट देछि. स्टेटमेंट कोन कोन देछि कि a कोन, a is the domain, b is the range. a intersection b, domain और range intersection रे 1 to infinite पर्यंत समस्त नंबर माइनस नेचुरल नंबर्स. The second statement होछि a union b is equal to 1 to infinite समस्त नंबर. तो हमको कहिबार अछि कोन से स्टेटमेंट ठीक अछि बोलछि. So this is our function. जे हम पाखर सीलिंग अछि, आमे डायरेक्ट देखि कहि परिबा. हमको किछटा नोन फंक्शन रे कन्वर्ट करिया को पय, जेमिति कि कैन वी कन्वर्ट सीलिंग टू ए नोन फंक्शन व्हिच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तापरे आमे आकु भी जानि जे कि मु ग्राफ बनेली फ्रैक्शनल पार्ट. व्हाट इज ए फ्रैक्शनल पार्ट? गोटे नंबर x को आमे लिखि परिबा तार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस तार फ्रैक्शनल पार्ट. एति आमे लिखि परिबा. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट आमे लिखि परिबा. तो दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट. फ्रैक्शनल पार्ट रो ग्राफ केमति आसीबो? I will clear the slide and draw a graph. So I will change my ink color also to yellow. This is fractional part. कहेंगे ना फ्रैक्शनल पार्ट सब बे 0 ରୁ 1 भितर लाइक obviously. कहीं गोटे नंबर जदी, this is our number, some big number. If 5.5, suppose this is a bar representing number 5.5 handwriting, then 5 is the integral part and 0.5 is the fractional part. तो सब बे फ्रैक्शनल पार्ट ता 0 ରୁ 1 भितर. तो एबे हम चेंज करिया. This is our function. तो आमे देखिबा जत्ते बे x इंटीजर हेतिबो, जत्ते बे x इंटीजर लाइक 1
2 6 etc. The ceiling of x is greatest integer function obviously जतबे इंटीजर न होइथिबो लाइक 1.1 तो आमे कहले ceiling of 1.1 is 2 ताको आमे लिखि परिबा greatest integer part plus 1 केमती greatest integer part 1.1 केते 1 plus 1 2 तो एबे हमर फंक्शन कोन हेला 1 upon under root of greatest integer part minus x मु कोन कहितली x is equal to fractional part plus integral part तो फंक्शन कन्वर्ट हो गला एटा जतबे इंटीजर जते हेतिबो सेतबे हम फंक्शन अछि 1 upon under root of minus fractional part of x fractional part of x सब बार 0 ରୁ 1 बितान सब बार पॉजिटिव तो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x सब बार नेगेटिव रो स्क्वायर रूट नेगेटिव रो स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करे तो इंटीजर मानन को पई fx एग्जिस्ट करिवो ना डजंट एग्जिस्ट फर्स्ट कंक्लूजन हमर कोनला जे इंटीजर मान को पई fx एग्जिस्ट करिवो नेक्स्ट जते इंटीजर नुहे सेतबे हम वैल्यू कोन आसला जते एक्स्ट्रा प्लस 1 तो 1 upon 1 minus fractional part of x ये सब बार एग्जिस्ट करिवो कहीं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कते 1 हबो 1 रो सब बार छोटो तो दिस इज एग्जिस्ट सो डोमेन हम को मिला डोमेन रहला सब रियल नंबर पे एग्जिस्ट करिवो एक्सेप्ट इंटीजर्स जदी इंटीजर्स हेतिबो हम पई तो हमको मिल गला जहा के हम दरकार थिला हम सेट ए हमको मिल गला r minus i एबे हमें आगो देखियो हम फंक्शन हला एबे ए हम फंक्शन को ये लगबा हमें रेंज कैलकुलेट करछि हमको इंटीजर पे एबे टेंशन ना बारने इंटीजर तो हबार नहीं तो हमें जानचे जे फ्रैक्शनल पार्ट इज दिस इंटीजर नहीं सेही पे एठी इक्वल टू साइन नहीं इंटीजर थिले इक्वल टू साइन ही था तो सेही पे एठी इक्वल टू साइन रहिबन का एठी इंटीजर ही नहीं तो जदी एटा ऊपर डिपेंड करियो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी सेम रेंज रहबो जदी कोन सी उडे जिंस एति मु कोची ए ग्राफ टा या एति तो मु 1 माइनस x ग्राफ करी जदी केमति होबो एमिति सेटा भी 0 ରୁ 1 भितरे रहइबो ना तो तार स्क्वायर रूट भी कोन जदी मु तार स्क्वायर रूट रो ग्राफ करबी तो सेटा ग्राफ टा हबो एमिति ना एमिति जाने डिक्रीजिंग ग्राफ किंतु 0 ରୁ 1 भितरे रहइबो बाहर को जीवन तो जे एटा जदी 0 ରୁ 1 भितरे ताको जदी मु 1 रे डिवाइड करी ता सब बे 1 ରୁ बड़ any number smaller than 1 if you divide always greater than तो हम रेंज पाई गली 1 ରୁ बड़ इनफिनिटी पर्यंत किछि भी पाए ए दिस इज आवर सेट बी हम पाखरे सेट ए रहिला r minus i सेट बी रहिला 1 टू इनफिनिटी हम देखिबा ए इंटरसेक्शन बी कोन हबो 1 टू इनफिनिटी सब नंबर एक्सेप्ट नेचुरल नंबर्स ए यूनियन बी कोन हबो ए यूनियन बी इज 1 टू इनफिनिटी सब नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स आल्सो हम पाखरे स्टेटमेंट कोन कोन थिला a intersection b is this is true but a union b रे नेगेटिव नंबर्स भी आसीबो so this is not true तो only s1 is true ए क्वेश्चन में हमें कोन देखिले nothing only some simple manipulation to compute the domain and range तो डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट करिया बहुत इंपोर्टेंट नेक्स्ट हम ओटे क्वेश्चन देखिबा ऑन टू फंक्शंस गोटे हमको डोमेन दिछि r इक्वल टू a b c d गोटे देछि को डोमेन 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस यदि खाली टोटल नंबर ऑन टू फंक्शंस पचा यदि फर्स्ट सेट रो नंबर ऑफ कार्डिनलिटी हला m सेकंड सेट रो हला n टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पचारे तो हमको चूज करिवार अछि कि ऑल n एलिमेंट्स को हमको m एलिमेंट्स भीतर बांटिया पई पड़िबो ऑल n एलिमेंट्स सच दैट केई खाली न रहो then it is a permutation question simple permutation question तो किंतु हम कंडीशन दिस fa is not equal to 1
ए रो जे इमेज हबो ए केबे 1 को पॉइंट कर परिबो ए कैन नॉट पॉइंट टू 1 केमिति कैलकुलेट करिवा टोटल नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन 5c2 2 काहे की 2 काहे की हम पाखरे चारटा नंबर अछि पांचटा वैल्यू अछि कोनसे ना कोनसे तो गोटे थिबो ना जे दुईटा धरथिबो ऑन्टो माने कोन समस्त धरिबा समस्त को धरिबा दरकार चारटा जाक रहइबे तो चार जन को धर गोटे गोटे मिलगला आउ गोटे जे रहिला से किछि भी नहीं परिबो ए चारटा भितरु किंतु ताको हमें केमिति लिख परिबा जे कोनसे दुईटा वैल्यू हमें नबा सेम वैल्यू तो जे कोनसे दुईटा तो 5c2 टोटल 10 टा वे रे हम पाखरे सपोज एमिति अछि पांचटी जिंस अछि हम करे छै हमें दुईटा रो ग्रुप बने के हमें टोटल ग्रुप केमि टोटल हमको चारि पार्ट रे डिवाइड करियार अछि किंतु दुई जन गोटे रहइबा आ तीनटा खाली रहइबा तो हमें 10 टा वे रे कर परिबा एटा को नहीं परिबा एटा को नहीं परिबा तो 5c2 into 4 factorial जे कौन सी ऑर्डर रही परी तो दिस इज 240 कंडीशन अच्छी fa is not equal to 1 तो जते बार fa equal to 1 हबो तो नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस केते हबो जदी fa 1 अछि तो लेट्स सी सपोज b c d जे रहिले हमर b c और d और 2 3 4 1 2 3 4 किछि भी नहीं परिबो किंतु चारटा को सपोज चार जन समस्त गोटे गोटे नेले तो 4 फैक्टोरियल किंतु जदी 1 को कहीं न नेले कहीं 1 को नवा दरकार नहीं कहीं 1 निया सरी f of a is 1 तो 2 3 4 पे सिमिलर 4 2 c into 3 फैक्टोरियल 60 हमको कहि जे fa is not equal to 1 तो हमें टोटल रो माइनस कर 240 minus 60 is equal to 150 concept कौन concept of onto function and then only permutation and combination एमिति एठी simple if it is something like 5 6 number of onto function is 0 number of onto function is 0 कहीं function सब गोटे कोई पॉइंट करिवो आ पांचटा हम पाखरे वैल्यू एठी अछि छटा वैल्यू अछि वी कैन नॉट पॉइंट जदी नंबर को डोमेन रो नंबर तो बेसी हिथिबो देयर इज नो onto function this is our concept okay this question is not clear but I will read it for you composition of functions there are two real valued function fx and gx such that gx is root x plus 1 f of gx is x plus 3 minus root x then f of 0 is equal first think for 30 seconds why this question is ambiguous and this question is theoretically not correct it means why this question is not correct means if you have thought it is asking f of 0 and we are given f of gx is this some people may think that g of x cannot be 0 g of x cannot be 0 because it is root x always positive plus 1 but when we do the composition आमे केतेबे कहिने कि f रो जहां भी आसुथिबो सबे gx रो आसीबो this question I am not saying question is incorrect question is fully correct this question is correct but the understanding is जदि हमको f of gx देला एवं f of 0 पचाला our goal is to compute f of x हम पाखरे g of x अछि हम पाखरे f of gx अछि हमको कंप्यूट करियार अछि f of x ना कि हमको एमिति x कंप्यूट करियार अछि जे gf is equal to 0 gx is equal to 0 this is a theoretical mistake done by students एया करियो अपन question is correct I have mentioned question have some ambiguity but this is not an ambiguous question for some people if they take this idea if they take this idea you find it then the question seem to be ambiguous but this is conceptually wrong idea this is the correct method this is the correct method we have g of x आम पाखरे g of x अच्छी आम पाखरे f of g of x अच्छी
हमको एफ ऑफ एक्स फाइंड करार अछि केमिति करिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स टर्म रे लिखिबा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स टर्म रे लिखिबा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स टर्म रे जदि हम लिखिबा तो जी ऑफ एक्स इज दिस तो जी ऑफ एक्स रो डिग्री होची 1/2 एफ ऑफ एक्स रो डिग्री होची 1 तो वी कैन हमें गेस करि परिबा कि एफ ऑफ एक्स इज क्वाड्रेटिक इन जी ऑफ एफ इज क्वाड्रेटिक इन जी ऑफ एक्स सो हमें I have directly written here. You can solve using suppose taking. You can take some f is equal to something like a some coefficient into g of x square plus some b into g of x plus some c. Then you have three coefficients here. You can compute all the values of a, b, c. Then you can get this thing. You can get f of g of x is equal to g of x square minus 3g of x plus 5. You can get this. So now I can replace g of x as x. F of x is equal to x square minus 3x plus 5. Now I can just write f of 0 is equal to 5 because I put 0. So this is a crucial step. This step is very crucial and this is not a conventional step. You have to think how can I represent f of x in terms of x. This is a thinking step. So this question can be medium to hard side question also, this type of questions. So if this question is clear, I can move on to next question. If you have any doubt, you can later ask in the chats. Series, and again series. Maths question format can design series in every questions. F they are given fx is equal to 2 to the power 2x by 2 to the power 2x plus 2. Then this is what? This is also a previous year. I don't know which year. Previous year JEE Advanced type questions. And this is not a difficult question, but sometimes JEE Advanced also asks some easy questions. In these questions, in this type of functional series, if we have some functional series, we need to observe very important thing I told earlier, that is called the observation. An observation is very important thing in mathematics. You have to observe things. You have to observe things. You have to think of all functions. What you can see in the question? 1/2023, 1/2023, 2022/2023, sum 1. 2/2023, 2021/2023, sum 1. So, is there some relation? Is there some relation between f of x and f of 1 minus x? We can try. We can try. Suppose now we try to solve this. F of x is this 2 to the power 2x by 2 to the power 2x plus 2. F of 1 minus x is 2 to the power 2 into 1 minus x this. आपको मुझे यदि सॉल्व करी 2 to the power 2 4 to the minus 2x ऊपर तो मल्टीप्लाई कर ले 2 to the power 2x तो 4/4 plus 2 to the power 2x आपको 2 एटे 2 रे कटिबो 2 रे काटले 2 एटा 2 रे काटले 2 एठी भी 2 रे कटिबो तो 2/2 to the 2 plus 2 to the power 2 ए दिटा को हमें ऐड करिवा कौन मिलेगा 2 to the power 2x by 2 plus 2 to the power 2x by 2 which is just equal to 1. तो हम क्वेश्चन सॉल्व हियर. दिस इज a very crucial step, observation. हमको ऑब्जर्व करिवार अछि जे दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको जदि वो माइनस एक्स करबी ये ऊपर तो किछि डिनोमिनेटर कटि के आसी पारे. सो आई ट्राइड, I get it 1.
Now it is just very easy. I can group pairs one एक by 2023 2022 by 2023 2 by 2020 2021 by 2023 ଆମ ପାଖରେ 1011ଟା such pairs why 1 2020 so it will be 2022 by 2 1011 and our answers will be 1011. What do we learn in this question? When we have any functional series, try to impose some relation like f of x plus f of 2 minus x or something like that. You can if you can impose such is equal to if that is coming of some constant c, you can impose some condition. Eta ହେଇପାରିବ ଏଇଭଳିଆ. These questions are easy. Now we are moving on to some difficult, not difficult, medium questions. Composition again. Interesting question. Fx is something given as ax minus 3. Gx is given as x to the power b plus c. It is given that, let me clear it. And let me also change the ink color to orange. F of 0 inverse. F of 0 inverse. Jadi x minus 7 by 2 to the power 1. Then what is value of f of g of ac into g of f of b? ଆମ ପାଖରେ f of x ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ unknown g of x ଅଛି ତା ଭିତରେ ଦୁଇଟା unknown ଆମ ପାଖରେ ଅଛି f of 0 composition ର inverse ଗୋଟେ function ଏଇଟାରୁ ଆମକୁ calculate କଣ କରିବାର ଅଛି a ଆମକୁ calculate କରିବାର ଅଛି b ଆମକୁ calculate କରିବାର ଅଛି c ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ calculate କରିବାର ଅଛି କେମିତି କରିବା sorry f of x is equal to x plus 3 g of x is equal to this तो f of g of x कौन होगा this x जगह रे x to the power b plus c पके दिली तो a x to the power b plus ac minus 3 suppose hx is f of g of x hx any function hx is f of g of x and we have given that h inverse x is x minus 7 by 2 raw power 1 by 3 then what I did when solving the questions by observation again observation b is equal to 3 a equal to 2 c equal to 5 then I just calculated f of g of ac which is 10 g of f of 3 this is f of g you can also calculate g but how I get this observation how ମୁଁ କେମିତି କରିଲି ଯେ ଦେଖି କହିଲେ ଯେ b equal to 3 a equal to c equal to so this slide ମୁଁ କିଛିଟା intuition ଦେଇଛି this thing only depend on practice if you practice questions you can see this type of things this is not hard but in some cases you can see this type of thing like h inverse x is this hx is this green is not visible I think so how to guess ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇନଭର୍ସ କରିବା ଶିଖେଇଥିଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ x ର ଟର୍ମ କୁ ଅଲଗା କରିବା y ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ିବା ଦେନ୍ y x କୁ y ଟର୍ମ ରେ ଲେଖିବା x କୁ y ଟର୍ମ ରେ ଲେଖିବା ଆମ ଫଙ୍କସନ ରେ ଆମେ y କୁ x ଟର୍ମ ରେ ଲେଖୁ y is something f of x बट ମୁଁ କହିଲି x କୁ y ଟର୍ମ ରେ ଲେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ x କୁ y ଟର୍ମ ରେ ଲେଖିବାକୁ ଯିବା तो x ର ଯେତେ ବି ପାୱାର ଥିବ ସପୋଜ x ର ପାୱାର 4 ଥିବ x ର ପାୱାର 4 is equal to y ସପୋଜ ତ ଯଦି ମୁଁ x କୁ y ଟର୍ମ ରେ ଲେଖିବାକୁ ଯିବି ପାୱାର ଟା ସବୁବେଳେ ରିଭର୍ସ ହେଇକି ଆସିବ 1/4 ତ ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଟ୍ୟୁସନ କଣ ହେଲା ଯେ ଏପଟେ x ର ପାୱାର b ଅଛି ମାନେ ଇନଭର୍ସ କଲା ମାନେ ପାୱାର ହେଇଯିବ 1/4
एवं इनवर्स पावर अच्छी, इनवर्स पावर अच्छी 1/3, so b is equal to 3. More formally, if you want to do formally, you can write y is equal to this. Then you can write y plus 3 minus ac by a to the power 1 by b is equal to x. How I write this? Suppose hx is y constant term एपट को आसला y plus 3 minus ac by a to the power 1 by b is equal to x. तो एठी सब्स्टिट्यूट करले b आसीला मोर 3, a हैला डिनोमिनेटर, a is equal to 2, 3 minus ac is 7, means minus 7, 3 minus ac is minus 7, so c is equal to 5. So I can do this. So what is the learning point? If you have any doubt, you can later ask. The thing is, if you have to compute given function, if you are given the inverse, you have something, you have y equal to fx. You have y equal to fx. Just try to somehow do x equal to g of y. Somehow. In explicit functions case, if x or जदि x और y separable ही नथिबो ताने तो करी हबो, किंतु जदि separable अछि तो x equal to g of y, then just if you replace y by x, y जगह रे x को रखि देले, that will be the inverse function. Suppose y equal to sin x, y equal to sin x, then x equal to sin inverse y. But y equal to x plus sin x, you cannot do. Y equal to x plus sin x, you cannot do. Thank you. Y equal to x plus sin x में x को अलग कर परिया. Sin inverse एक अलग करिए. So this is the idea behind this question. Next, the most important concept, functional equations. Functional equations. Both question are functional equations only. Question कौन पचारची? Function is given as this. This is our domain 1, 2, 3, 4. Our codomain is A such that A belongs to Z. This is comma अछि एठारे. Mod of A is less than equal to 8. माने आमो value गुडा होची -8, -7, -6 सेटारे जाय 8 जाय. जति भी integer value आ सब गुडा आमो codomain रो अछि. Satisfying this equation, this is called a functional equation. This is called a functional equation. F of n plus 1 by n f of n plus 1 is equal to 1. F of n plus 1 by n f of n plus 1 is equal to 1. This is the equation for n equal to 1 to 3. Of course, n plus 1 is 4. Number of function possible. Kemiti approach kariba. First thing, the very first thing, kichda case re. The first thing will be guess the function. The first thing is guess. I am not able to write because I don't have any pen. Guess. The second thing is reduce range. Reduce range for someone. Like you can reduce the range for one by imposing some condition. 2, 3, 4 रो किछि condition रख देबा कि 2 f of 1 is equal to f of 2 by 2. तो f of 2 by 2 जदि रहिला तो f of 1 8 केबे हेई परिबोनी, यानी f of 2 16 हे जिवो. तो f of 1 सब 4 भितर रहिबो. तो रिड्यूस कर परिबा. आउ किछि केस रे इंडक्शन. We can apply induction to get to the function. हमें देखियो आबे कोन करिया.
we have this equation. ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ୟାକୁ ଖାଲି multiply n f of n plus f of n is equal to 1. इंडक्शन मते कोठी लगेबार देखो तो फर्स्ट आमे वैल्यू हम पाखरे ओनली डोमेन रे चारटा वैल्यू अछि 1 2 3 and 4. So मु करबी कोन f of 1 plus f of 2 is equal to 1. F of 1 into f of 1 plus f of 2 is equal to 1. So f of 2 कोन आसला 1 minus f of 1. F of 2 आसला 1 minus f of 1. तो f of 1 minus 8 रो 8 भितरे, sorry, this should be 2. This should be 2. F of 2 हमर कोन minus 8 रो 8 भितरे अछि. F of 2 is 1 minus f of 1. तो f of 1 टा हमर minus 7 रो 8 भितरे रहै. एक्चुअली देखा गले minus 7 रो 9. କିନ୍ତୁ 9 ତ ଯିବନି f of 1. f of 1 ବି 8 ଭିତରେ. ତ f of 1 ଟା minus 7 ରୁ 8 ଭିତରେ ରହିବ. ତ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଆମେ रेंज रिड्यूस करूछे गोटे वैल्यू ପାଇଁ ଆମେ ତାର रेंज रिड्यूस करूछे. f of 1 is equal to minus 7 ରୁ 8 f of 1 ର रेंज. Again we can try to do the same. 2 f of 2 plus f of 3 is equal to n f of n plus f. तो f of 3 ହେଲା 2 minus f of 2. तो 2 minus f of 2 कौन है 2 into 1 minus f of 2. 2 into 1 minus f of 2. And 1 minus f of 2 is f of 1. Yes, 1 minus f of 2 is f of 1. Let me check again. 1 minus f of 2 is f of 1. Because f of 1 plus f of 2 is 1. तो 1 माने तो f of 3 is equal to 2 f of 1. तो हमको कौन मिला जमती मैं एग्जांपल देती थी. तो f of 1 minus 4 ରୁ 4 ଭିତରେ ରହିବ. କାଇଁ ଯଦି ତାଠୁ ବଡ ରହିଲା f of 1 ମାନେ f of 1 ଯଦି 5 ବି ରହିଲା ତାହେଲେ f of 3 10 ଯାଇ ପାରିବ ଯାକି ଆମ ରେଞ୍ଜ ବାହାର କରିଛି. କାଇଁ ଆମ ରେଞ୍ଜ କହିଛି -8 ରୁ 8. ଆମ ରେଞ୍ଜ होची -8 ରୁ 8. ତ f of 1 है -4 ରୁ 4. तापरे अगेन 3f of 3 plus f of 4 is equal to 3. तो f of 4 है 3 minus 6f of 1. f of 3 को मैं लिख दिले 2f of 1. तो f of 4 है 3 minus 6f of 1. तो f of 1 कौन कौन ही परिबो बे -5 by 6 -11 by 6 भितर ताठु बेसी आ जाई परिबो ना. f of 1 cannot go beyond this. काहे कि जदि 8 बाहर को गला ताहाले f of 4 ता रेंज भितर रहइबो. किंतु आमे जानि जे f of 4 रो रेंज होची -8 ରୁ 10. सेही हिसाब रे हमको 1 रो रेंज रखियो. एक्चुअली जदि मु कहिबा को जेबी एगुडा किछि दरकार नथिला बेसी ना दरकार नथिला बट दरकार काहे कि थिला आमे f of 4 को ओनली f of 3 टर्म लिख परिबा. तो हमको जस्ट एटा दरकार. वी नॉट नीड दिस. हमको एटा दरकार नहीं इन दिस क्वेश्चन. किंतु हमें किछटा केस रे एमिति भी हे पारे कि एठी जो बाउंड टी मिलबो एठी जो बाउंड मिलबो ए बाउंड टू सेटा बेसी स्ट्रांग हेतिबो. सेटा -5 by 6 to 11 by 6 सपोज एटा -5 by 6 to 5 by 6 मिलतो. बाउंड ऊपर डिपेंड कर. तो स्टेप बाय स्टेप कर तो हमको मिलला f of 1 should belong to this bound only. तो f of 1 गोटे इंटीजर हमें जानि छ f of 1 is integer. तो f of 1 जदी आउ भीतर को हमें जाई परिबोनी कहीं 3 4 हमें सब वैल्यू पर्यंत पहुंचेला 4 पर्यंत पहुंचेला हमें 5 आउ जाई परिबा नहीं. तो f of 1 can be either 0 or 1. f of 1 can be either 0 or 1. आउ किछि हे परिबो नै. f of 1 ए रेंज भीतर रहबा दरकार. तो दुई हमको ओनली दुईटा पॉसिबल वैल्यू ऑफ f of 1 एवं f of 1 वैल्यू अनुसार अलग वैल्यू हमको सब मिल जाय. f of 1 0 हेले f of 2 1 f of 3 0 एंड f of 4 हैला 3. तो हमको सेम अनुसार सब वैल्यू मिल जाय. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन हम पाखरे कोन रहला 2. ओनली 2 पॉसिबल फंक्शन हम पाखरे रहला. सो हमें कोन देखिले व्हाट टू डू. जेमति मु कहितली किछटा जिंस रिड्यूस रेंज गेस इंडक्शन इस फंक्शनल इक्वेशन यदि हम पाखरे आसला हम ए जिंस ट्राई करबा सब. तो this question should be clear. We try to reduce the range by doing हम पाखरे एठी देखो सिंपल जिंस डोमेन कौन थिला 1 2 3 4 5 जाय भी जदी थाता
आमे भाभी परिवा जे आमे रेंज रिड्यूस करी करी जाई परियो काई बेसी जाई तो दबनी निहाती 4 5 6 जाई ही हाईएस्ट जाई परियो तो दिस another functional equation f of x plus y is equal to f of x plus f of y. Simple. F of x plus y is f of x plus f of y. And f of 1 is 1 by 5. For all xy belongs to integer. For all xy belongs to integer, this is holds. F of 1 is equal to 1 by 5. Then हम पाखरे किसी सीरीज देची ताको सॉल्व करते देची m रो वैल्यू पचाची तो हमको सिंपल कथा हमको फाइंड करार अछि f of n फाइंड न पले हम कर परिबा f of n फाइंड न पले हम कर परिबा नाही सिंपल काई हम m कोन जान तो हम पाखरे फंक्शन कोन देला हम पाखरे फंक्शन अछि f of x plus y is equal to f of x plus f of y हमें जाने छे f of 1 is equal to 1 by 5 f of 2 is equal to 1 by 5 plus 1 by 5 is equal to 2 by 5 f of 2 is equal to 1 by 5 plus 1 by 5 is equal to 2 by 5 यदि मैं f of 3 लिखबी f of 3 कोन हला f of 1 plus f of 2 में लिखि परिबी तो f of 2 को मु पुनी कोन लिख परिबी f of 1 plus f of 1 तो 3 by 5 सिमिलरली जदि मु देखिबी f of n f of n को मु कोन लिख परिबी f of n minus 1 plus 1 पुनी f of n minus 1 को मु कोन लिख परिबी f of n minus 2 plus f of 1 आपको पुनी f of n minus 3 f of n minus 4 तो simply inductive behavior one type of inductive behavior ये डाला कि मु f of n को लिखि परिबी n into f of 1 काई मु डिकंपोज करी करी लास्ट जाए पहुंची परिबी ना जदि बुझा पड़थिबो f of 2 is equal to 1 plus 1 3 को मु लिखि परिबी 1 plus 1 plus 1 n को 1 plus 1 plus 1 up to n times तो मु हे पाइली f of n is equal to n into f of n तो f of n by n f of n by n मते काहे दरकार क्वेश्चन रे सीरीज रे f of n by n अछि तो मु एठे देखले जे f of n by f होची f of 1 जाके होची कांस्टेंट f of n by n is constant by inductive behavior obviously I am गोटे पर गोटे किंतु solving this is also called solving सॉल्व कर करी हमें पहुंचले इंडक्टिव बिहेवियर जदी न कहया ପାଇଁ चाहछो ठीक अछि इंडक्टिव बिहेवियर हम पाइले तो f of n by n को कोन लिख परिबी f of n by n हम 1 by 5 लिख परिबी देन म पाखरे सिंपल सीरीज रहला 1 to m 1 by n plus 1 into 1 by n plus 2 दिस इज अ सिंपल सीरीज 10th क्लास रे मध्ये पढाइथिबो बदे सीरीज टा 1 को म लिखि परिबी n plus 2 minus n plus 1 डिकंपोज हे गला दिस कटिबो एपटे 1 by n plus 1 एपटे आसले दिस कटिबो 1 by n plus 2 तो हमको इक्वेशन कोन मिलला 1 by 5 into 1 by n plus 1 minus 1 by n plus 2 is equal to so this is 1 by 2 this is minus 1 by 2 minus 1 by 3 1 by 3 minus 1 by 4 so I can go up to 1 by m plus 2 this is 5 by 12 so 1 plus m plus 2 is 1 by 12 so I get m equal to 10 so this question हमें कौन सीखले my question सीखले कि sometimes solving helps and by inductive behavior if you can solve we can do like this and we can get to our answer now this is my last question a good practice this is a very good question and why I call it a good practice s is given a domain is given 1 2 3 4 5 6 and the codomain is p of s p of s कौन p of s is the power set of s power set समझते जानछथि power set केमति लिखिबो power set रो फर्स्ट एलिमेंट हला 5 power set कहा कहले गोटे सेट रो power set होची से सेट रो सब सबसेट मानकर सेट power set रो एलिमेंट कोन आसीबो 5 खाली सब सिंगल एलिमेंट उडा 1 2 देन डबल एलिमेंट 1 2 2 3 सेमति भी आस परिबो तापर 1 2 3 1 2 3 4 एवं आउ गोटे कंडीशन अछि
f of n is a subset of f of m. f of n is a subset of f of n where n is less than m. माने सबु जदि f of 1 should be subset of f of 2 3 4 5 6, f of 2 should be subset of 3 4 5 6, f of 3 should be subset of 4 5 6 and ahead. And we have also one one function. हमको दरकार one one function केमती सॉल्व करिवा. मु टिके फास्ट जाउची. f of 1 has one element, f of जदि f of 1 रो गोटे एलिमेंट अछि, obviously f of 2 रो दुईटा एलिमेंट होबा पड़ियो काई गोटे एलिमेंट सेम एलिमेंट आसीबो. किंतु ना हमको कहछि वन वन फंक्शन तो f of 1 रो गोटे हेले f of 2 रो दुईटा f of 2 तीनटा तापर छटा तापर नंबर ऑफ पॉसिबल चॉइस केमती ना f of 1 रो गोटे एलिमेंट पे हमें छटा चॉइस अछि 6 c1 म 6 डायरेक्ट लिख देली तापर पुनी 2 पे पांचटा चॉइसेस इनटू 5 c1 6 इनटू 5 इनटू तो 6 फैक्टोरियल. प्रॉब्लम सत्तबे आसीबो जतबे f of 1 है 0 एलिमेंट. जदि f of 1 रो 0 एलिमेंट अछि तो f of 2 रो 1 एलिमेंट ही परिबो 2 एलिमेंट भी ही परिबो. यदि f of 2 रो 1 एलिमेंट अछि, यदि f of 2 रो 2 एलिमेंट अछि ठीक अछि नॉर्मल चलिबो. f of 2 रो 2, f of 3 रो 3, f of 4 रो 4, f of 5 रो 5, f of 6 रो 6. किंतु f of 2 रो यदि 1 अछि, f of 3 रो 2 हे परिबो नहले 3 परिबो. तो गोटे ट्री टाइप रो स्ट्रक्चर आस जिवो. तो हम कैलकुलेट कर दोती यदि f of 2 रो दुईटा एलिमेंट अछि तो नंबर ऑफ चॉइस वी कैन सिमिलर वे कैलकुलेट कर परिबा 6c2 into 4c1. This is the exercise for you how to calculate. But the thing is, this is our tree. You have to understand this. This is the last part of the lecture. Jodi f of 2 रो गोटे एलिमेंट अछि, if f of 2 has one element, there are two choice. f of 3 has three element, f of 3 has two element. f of 3 रो 3 element है नॉर्मल स्ट्रक्चर पुनी f of 4 रो 4, f of 5 रो 5, f of 6 रो 6. किंतु जदि f of 3 रो 2 एलिमेंट अछि मते f of 4 रो 4 एलिमेंट हे परिबो, f of 4 रो 3 एलिमेंट हे परिबो. तो f of 4 रो 4 हेले पुनी नॉर्मल सीरीज f of 5 रो 5, f of 5 रो 6, f of 6 रो 6. किंतु f of 4 रो जदि 3 एलिमेंट थिबो म पाखरे चॉइस आस जिवो जे f of 4 5 रो 4 एलिमेंट किंबा f of 5 रो 5 एलिमेंट. एंड दिस इज द लास्ट. f of 5 रो 4 एलिमेंट हेले म पाखरे एया रहिबो, f of 5 रो 5 एलिमेंट हेले म पाखरे. So then final answer I can get like this. So this question was nothing. You have to just explore the fact of the one function, then do the permutation combination. This is a good practice. So I gave it as a practice for you. I am continuing the slide. If you want to verify the answer at last, this will be the answer E240, and this will be the question. If you can take the screenshot of the question, I am removing any marks. This is for a practice question. And आज हमें कौन-कौन सीखले जो फंक्शन रो डिफरेंट वैल्यूज अछि. The main things are functional equation. The main thing is functional equation, inverse function, composition function. Composition रो inverse केमती होबो, one function on two function. Main thing is this domain range calculate करियार अछि हमको भलो से. एवं फंक्शनल इक्वेशन आसले फर्स्ट थिंग इज गेस करिवा, इंडक्शन हे परिबो किंबा डोमेन रेंज रिड्यूस कर परिबो. These are three things we can do. So आज फंक्शन रियल फंक्शंस रे एतिकी जिंस अछि. थैंक यू.